Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Today we are going to discuss about 8086 addressing modes. What are the addressing modes? The meaning of addressing mode is that it is a mechanism through which we can determine how the operand is taken from the register or memory. Means it is not an instruction, it is not any command or anything else. It is just a scheme, a mechanism through which we can determine how the operands are taken out from the register or memory. Like if there is a register R and here we have mentioned 3200. Let this register is of 16 bit, okay, and this contains 3200. There is a location in memory that address needs to be 3200. Here another data that is 4152. Now is 3200 is our operand or 4152 is our operand? How we can determine this? This determination is done using addressing modes. Okay. There are different ways to get the operands, either directly or indirectly or relative. Relative means by adding or by calculating the effective address of the operand. Operation specifies the type of action to be performed. There are two things in an instruction. One is operation, second is operand. Operand is a task which is to be done. That is addition, subtraction, load, store, move, etc. etc. Whereas the operands are the data. Operands are the data. Data means on which the operation is to be performed. If we say add, now what to add? A, B, X, Y. किसको add करना है? The data or the operand is the that thing on which the operation is to be performed. Operand can be placed either in one of the processor register or memory. Means operand can be taken out from register or as well as from the memory. Means we can have operands in register or in memory. It is possible that one operand is in register, another one is in memory, or it is possible that both the operands are in register or both the operands are in the memory. Everything is possible. Now here we have few different addressing modes of 8086. As their name suggests, immediate addressing mode, register addressing mode, direct memory addressing, register based, indirect, register relative, base index and relative base index. The last is implied addressing. Okay, these are the name of the addressing modes which we will discuss today. First is immediate addressing mode. Immediate addressing mode, as its name suggests, immediate means the operand is specified in the instruction itself. It is similar to 8085 addressing mode. जैसा immediate addressing mode 8085 का है, बिल्कुल same 8086 का भी वही है. Means the data is given in the instruction itself. Data means operand. It is given directly in the instruction itself. Here the register is CL. Now see, the data is of 8 bit. H stands for hexadecimal. 8 bit data means 1 2, that is 12. 12 is a 8 bit data. So 8 bit data को मूव कराने के लिए हमारे को कितना रजिस्टर चाहिए होगा? 8 bit का. That's why we have used CL. Okay, if the data is of 16 bit, then we must use CX. Okay, you can use either of the register AL, BL, CL, DL. Okay, in case of 8 bit. If the data is of 16 bit, then you have to use 16 bit register and you can use any one, that is AX, BX, CX or DX. This instruction moves 12.
immediately into CL register. I have told you earlier, in case of 8-bit data, you can use only the L type of registers. Means the register is of L and H, either A, B, C, D. But if the data is of 8-bit, then you can use only this type of registers, that is L type, lower 8-bit of register. You cannot use this type of registers directly for 8-bit. Means if you write instruction MVI CH, 12H, this is wrong because you cannot transfer 8-bit data to higher order 8 bits to the register. For that, you need to send lower. Okay. Next is register addressing mode. Register addressing mode means here, as its name, register. Registers are used. Here, no direct or indirect, no keyword like that. It means register to register transformation is there. Example is this, move AX BX. Okay, so 16-bit data of BX is transferred to the 16-bit register AX. Let AX this and BX is this register. If BX contains 1, 2, 3, 4, then this instruction will do what? It will transfer the data of BX to AX. Now the content of AX will be 1, 2, 3, 4. Okay. In this case, you can also use instruction like this, move AL comma BL or BL comma CL or CL comma BL. In that case, 8-bit data will be transferred 1 to 1 2. Okay. Now in this case, what will happen? The 8-bit data will be transferred. In case of AX BX, 16-bit data will be transferred. You cannot use move CL comma BX. You cannot use like this. Why? Because this is a 16-bit and this is 8-bit. So 16 to 8 or 8 to 16, that is not at all possible. So both the destination and the source registers are of same capacity, either both of 8-bit or 16-bit. Okay. The next is direct memory addressing mode. Direct memory means the address of memory was used here. In this mode, address of the operand is directly specified in the instruction. Address of operand is directly specified in the instruction. Means instruction में अब जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस से आप डेटा को फेच करेंगे. उस एड्रेस से आप डेटा को फेच करेंगे. Here only the offset address is specified. This is the offset address only. Offset means within the block only. The segment being indicated by the instruction. Offset address instruction में दिया जाएगा. Instruction क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से सेगमेंट से डेटा उठाएगा. In this case, move CL, 4321N, 4321H. Okay. Now here data is to be transferred. So the address of data segment will be taken directly. Automatically data segment का reference लेगा. Why? Because instruction move कर रही है. क्या move कर रही है? Data move कर रही है. कोई भी instruction pointer के ऊपर काम नहीं कर रहा है. Instruction क्या transfer कर रहा है? Data. So by default ये कौन से segment को represent करेगा? Data segment को. That's why the location 4321 in the data segment. Data segment का जो starting address है वो data segment register से मिल जाएगा. उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाने के बाद अब इस ब्लॉक के अंदर जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल दिस एड्रेस इज 4321. ओके, सो दिस कंटेंट, दिस location's content will be transferred to register CL. Okay, the actual address will be taken from this equation, data segment into 10. Okay, the starting address, let the starting address is 2000. Okay, then 2000 multiplied by 10, that is 20,000, added with 4321.
Now 24321. This will be the physical address of this location. The physical address of this location is 24321. Okay. Assume that data segment is, as I said, the data segment is 2000. Let the data segment is from 5000. Then what will be the address? 5000 into 10, that is 50,000, plus 4321, that is 54,321 H. So the square bracket shows the content of this location. Okay. If in the previous slide you can say, in this case, CL is moving directly 1 to H. Now 1 2, that is 12. 12 is data, that's why no square brackets is written over here, directly 1 2. But if any number is written in the square bracket, it means that this number is not the data but the address. So now the address of data is 54321, the physical address. So content of this address will be transferred to CL register. Next is register based indirect. The previous one was direct, this is indirect. In case of indirect, the effective address of the memory may be taken directly from one of the base register. Now base register represents the address. Okay, either base register or index register. Okay, so in this case you have to take the base address or index register that is specified in the instruction. जो भी instruction होगी वो either base address के लिए होगी या किसी index register के लिए होगी. So using base register or index register you can obtain the effective address of the operand. Now in this case the instruction is move cx comma bracket square bracket में लिखा है bx. When the square brackets are used, it means this is giving the address. Okay, if we write like this, move cx comma bx, so this will be the register mode. Okay, so content of bx will be transferred to cx. Now as the bx is written within the bracket, so it shows that bx is containing an address. Bx is a register that is containing any address like 1111. So the memory location 1111 will be transferred to CX. Okay, will be transferred to CX. Now how it works, this instruction moves a word from the address pointed by BX. Okay, here we have used 16-bit address, so the data is 16-bit. The complete 16-bit data will be transferred to 16-bit register. Okay, we have 16-bit register as CX, but it is of two parts, CL and CH. So 8 bits will be transferred in CL and 8 bit transferred in the CH. How that works? Instruction moves a word from the address pointed by BX. BX जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस से, उस पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा उठेगा एंड दैट विल बी कॉपीड इनटू CL. BX से डेटा उठकर कहां जाएगा? CL में. ओके, ये CL है और CH में क्या जाएगा? नेक्स्ट लोकेशन दैट इज BX+1. जो भी एड्रेस है इसके अंदर, हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, टेट्रा 141 लिख दिए, तो नेक्स्ट विल बी 1112. ओके, सो यहां से जो एलिमेंट उठेगा, जो डेटा उठेगा, वो कहां जाएगा? CH में. Now in this mechanism the complete 16-bit data is transferred, BX and BX+1. Okay, these two locations accessed using this mechanism in this addressing mode and the data is copied. See the BX address of data segment. This is the representation, technical representation. इसको आप इसी तरीके से लिखेंगे. पहले आप सेगमेंट का एड्रेस लिख दिया आपने, लाइक डेटा सेगमेंट कॉलन, उसका कौन सा एड्रेस? वो वाला एड्रेस जो BX में लिखा हुआ है. वो कहां चला जाएगा? पहले BX वाला CL में जाएगा और BX+1 वाला CH में जाएगा. अगेन डेटा सेगमेंट का है तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू CH. ओके, next is register relative. As it is relative means you have to add something.
ओके, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हमेशा ऐड करा जाता है एड्रेस में, तभी आपके पास नया एड्रेस आता है। कोई भी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, चाहे वो 8085 का 8086 का है, अगर रिलेटिव वर्ड आ रहा है इट मींस यू हैव टू ऐड समथिंग, आपको ऐड करने के बाद ही इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ रजिस्टर रिलेटिव मींस रजिस्टर होगा आपके पास। कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं हम इसमें? बेस रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं यहाँ पर? बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर इज BX। जनरल पर्पस रजिस्टर में मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ABCD, उनके कुछ स्पेसिफिक टास्क भी होते हैं। A फॉर एक्यूमुलेटर है, B फॉर बेस, C फॉर काउंट, D फॉर डेटा। तो जब भी आप बेस रजिस्टर की बात करोगे इट मींस ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर B की बात कर रहा है, दैट इज BX। 16 बिट है तो BX, और 8 बिट होगा तो BL। ओके, इन दिस मोड operand address या effective address is calculated using one of the base registers। one of the base register का मतलब क्या हुआ? either BL और BX और BH, जो भी यूज कर रहे हो आप। add an 8 bit और 16 bit displacement। displacement मतलब offset। ओके, बेस रजिस्टर से आपने कंटेंट लिया, बेस एड्रेस लिया, अब उस बेस एड्रेस से कितने प्लेस आगे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेमोरी। ओके, अलग अलग इसमें ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं। आपके पास बेस एड्रेस आ गया, फर्स्ट एड्रेस। ओके, दैट इज इन द BX। दैट इज इन द BX। ओके, सो BX के बाद आपने आगे +4 किया है, मींस इसमें 4 लोकेशन और आगे जाना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और offset। So now the address will be, effective address will be content of base register plus 4, hexadecimal 4। This instruction moves a byte from the address pointed by BX plus 4। BX में 4 ऐड करने के बाद जो एड्रेस आएगा, let BX की वैल्यू है 2000, 4 ऐड कर दिया आपने तो आ जाएगा 2004। सो 2004 के ऊपर जो डेटा है, जो बाइट है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा अब CL रजिस्टर में। ओके, दैट विल बी ट्रांसफर टू CL रजिस्टर। नेक्स्ट इज बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। नाउ बेस इंडेक्स्ड, तो बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर। इन दिस केस बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर, these two registers are added to obtain the content of these two registers are added। registers are nothing but just like a variable। okay, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं, बस वही होते हैं, वैसे ही सिमिलर होते हैं रजिस्टर्स। बट एक लिमिटेशन होती है कि वेरिएबल्स तो आप जितने मर्जी बना सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स तो ABCXYZ जितने मर्जी बना लो, बट रजिस्टर्स जितने बने हुए हैं आपको उतने ही यूज करने हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन वेरिएबल और रजिस्टर का सेम होता है। जैसे आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम आप रजिस्टर्स यूज कर सकते हो। ओके, सो यहां पर क्या होगा? बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर, इन दोनों के कंटेंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आपके पास आया, दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। और उस एड्रेस से आप ऑपरेंड यानी कि डेटा या बाइट जो भी वहां स्टोर्ड है उसको फेच करेंगे एंड दैट विल बी मूव्ड इनटू द CL। सी BX plus SI will give you an address and number। okay, let that number is N। so that number of data segment के पर्टिकुलर उस नंबर लोकेशन पर जाएंगे, जो भी कंटेंट मिलेगा that content will be transferred to CL register, that will be transferred to register CL। this was about base indexed addressing mode। now next is relative based index addressing mode। relative based index addressing mode। now based, indexed and relative, three terms are there। based means base register, indexed means index register, and relative means some displacement। now you have to add all these three। okay, address of operand is calculated as the sum of base register, index register and 8-bit or 16-bit displacement। now see index register, so index register are SI and DI, so you can use either of the index register। जो भी रजिस्टर है
जो भी आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो वो किस इंडेक्स रजिस्टर को यूज कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो DI यूज कर रही है तो DI के कंटेंट को ऐड करेगा। अगर इंस्ट्रक्शन SI यूज कर रही है सेगमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट के इंडेक्स को फेच करना है। ओके, नाउ कंटेंट ऑफ BX plus DI plus 20 will gives you the address and data on that address will be transferred to CL. This will be added and found in the data segment, then it will be transferred to CL register. It is not necessary कि हमेशा 20 ही रखा जाएगा। ओके, 5, 10, 20 जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो, because it is just a displacement. लास्ट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड जैसे 8085 में पढ़ा था, इंस्ट्रक्शन में खुद से ही ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन में खुद से ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है, लाइक ऑपरेंड्स आर इम्प्लाइड और इम्प्लिसिटली डिफाइंड। इम्प्लाइड का मतलब होता है इम्प्लिसिटली डिफाइंड। इम्प्लिसिटली डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन जो है वो खुद से ही उस पर्टिकुलर ऑपरेंड पर ही काम करेगी और कोई ऑपरेंड आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन दी है दैट इज STC। STC मतलब सेट्स द कैरी फ्लैग। तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये कौन से ऑपरेंड पे काम करेगी? कैरी फ्लैग पे काम करेगी और ऑलवेज उसी पर काम करेगी। इसमें आप कोई और नया ऑपरेंड ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो those instructions in which the operands are implied or implicitly defined and hence not specified in the instruction, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन में आगे कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। those instructions works under the implied addressing mode. Okay, this is the reference of these addressing modes. You can read these addressing modes from AK Ray and KM Burchandi book. All the addressing modes are given in that book. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.